Problem solving. Courses of experimental psychology usually start with what experiments are about, their design, psychophysics, sensation, perception, and they end with advanced cognitive processes. So after learning and memory, we look at how knowledge is represented, and we have completed that section of the course. The most advanced functions with cognitive functions that we study in experimental psychology are three: problem solving, reasoning, decision making, and that leads us to how language takes place. So starting problem solving, a problem is defined as when there is an obstacle between a present state and a goal. And it is not obvious immediately how we will get to our goal, how we will get around the obstacle. So we have a problem. That's how problem occurs. A problem is difficult and the solution is not immediately obvious. That is why we call it a problem. Kinds of problems that we have to solve. If I ask in any of my classes, I get answers like getting assignments done on time, how to pay your fee on time, which is a different problem from meeting a deadline, algebra, statistics, chemistry problems, which are like mathematical kind of problems or formula problems, dealing with other people, how to be popular, how to get out of a situation in your university or in your workplace, which courses to choose, how to learn a new software. These are some of the problems that young people would come up with. As we can see, they are very different. Some are related to other people, some are related to mental functions that we have to solve by working on them, and some need creativity. They are problems which are well defined. They usually have one correct answer. There are certain procedures. अगर आप उन procedures को follow करें तो problem की solution निकल आएगी. फिर ill defined problems होते हैं. ये अक्सर हमारी रोजमर्रा जिंदगी में होते हैं और इनका कोई एक करेक्ट आंसर नहीं होता और इनकी सॉल्यूशन का रास्ता क्या है वो भी क्लियर नहीं होता. गेस्टाल्ट अप्रोच ये कहती है कि सक्सेसफुल सॉल्यूशन इस चीज पे डिपेंड करती है कि प्रॉब्लम आपके ब्रेन में किस तरह रिप्रेजेंट हो रहा है, देख कैसे रहे हैं आप उसको. द सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय फर्स्ट परसीविंग द ऑब्जेक्ट and then representing it in a different way. Now looking at this, what we see here, the problem is if the length of the circle's radius is r, what is the length of line x? The Gestalt approach or Gestalt psychologists call the process of changing the problem's representation restructuring. There is a sudden insight sometimes and you say, aha, I know the answer. But there are also non-insight problems like those in algebra, where you don't need insight, you know the procedure to solve the problem. And interestingly, here is the solution of the problem that we saw earlier. If you draw a line here, which wasn't in the problem itself, you see the solution. Length of x is r, because wherever you draw that line, the length will be the same. Now that it is restructured and represented in a different way, you can find the solution. Many experiments in problem solving show how algebra problems and insight problems were solved. How close people were to solving the problem by towards the end when they found the solution. So as we see, the insight problems, it comes suddenly. The algebra problem, it comes slowly.
there are certain barriers to problem solving. One of them is called fixedness. We only think in a certain way. उससे बाहर नहीं निकल सकते उस खाने से, हम उसी तरह सोच रहे होते हैं, इसलिए सोल्यूशन नहीं आ रही होती. फंक्शनल फिक्सिडनेस, किसी ऑब्जेक्ट के यूज पे सुई फंस जाती है आपकी. अब ये जो प्रॉब्लम है ये है कि आप एक कमरे में हैं और आपके पास दीवार पे एक कॉर्क बोर्ड लगा हुआ है. आपके पास जो मटेरियल है वो कुछ कैंडल्स हैं, कुछ थंब पिन्स हैं और एक मैच बॉक्स है. आपने कैंडल को दीवार पे लगाना है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रॉब्लम्स दैट हैव बीन ट्राइड इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपेरिमेंट्स. इसको मेंटल सेट कहते हैं कि हम सोच ना सके उस खाने से बाहर निकल के जिसमें हमने उस ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है. ये मैच बॉक्स का डब्बा है, उसको दीवार पे पिन्नों से लगा के कैंडल को उस पर माउंट कर दिया. ये देखें, हम सोच रहे थे कि कैंडल जल तो जाएगी, माचिस तो कैंडल को जलाने के लिए. सो यू गेट आउट ऑफ द फिक्सिडनेस. दूसरा जो है, इस एक्सपेरिमेंट में उसको ये कहा हुआ है कि उसने ये दूसरी स्ट्रिंग पकड़नी है. वो इसको पकड़ता है तो ये छूट जाती है. यहाँ पे प्लायर्स हैं और कुर्सी है. सो इफ ही यूज stands on the chair, use the pliers to get the other string. तो प्लायर के नीचे जब आप वेट लगा देंगे ना तो वो झूलता हुआ आपकी तरफ आ जाता है. दैट इज अगेन अ वे ऑफ गेटिंग आउट ऑफ फंक्शनल फिक्सिडनेस. ये भी एक्सपेरिमेंट में इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो पेश किए जाते हैं. Another famous problem is this, which takes a little while to look at. How do you get this amount? So this is the problem. Jug A has 21, jug B has 127, jug C has 3, and you need 100 actually. So this is showing you कि 127 में से 21 निकाल दिए तो आपको ये 106 आ जाएंगे. तो अगर आप इसमें से 2 दफ़ा ये माइनस कर दे तो 100 पूरे हो जाएंगे. मेंटल सेट जो है वो उसमें प्रॉब्लम का कम इम्कान होता है सॉल्व होने का. जब आपका पहले से कोई मेंटल सेट ना हो, फिक्स ना हो, तो प्रॉब्लम ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो सकता है.